Tonight on This is Exclusive, we take you through three first important stories that are coming in from Kashmir, where we take you through what really stands in an ancient temple, and is it only about Ayodhya? What are the preparations that are essentially taking place in temples across the country? In fact, this report comes in from North Kashmir's Baramulla district in Rasai Tank, an ancient temple. This report has been filed by my colleague Arawat, and this is just the beginning. Republic TV has been leading the coverage, getting you reports from across the country, starting all the way from Kashmir down south in Kanyakumari. What exactly is happening? How exactly are the temples also being revamped? Take a look at this special report coming in from North Kashmir. अयोध्या से पहले कश्मीर घाटी में अगर हम देख रहे हैं, लगातार कश्मीर घाटी में जो मंदिर हैं जो कि 1990 से पहले कश्मीर घाटी में बंद हुए थे, हालांकि उनकी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान द्वारा कश्मीर घाटी जो टेररिस्ट आए थे उन्होंने बंद करवा दी थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी में फिर से किस तरह से एक्टिविटी शुरू हो रही है। कश्मीर के अलग अलग जगहों से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं उनमें यहाँ पे पार्ट लेते हैं। इसके साथ अगर हम इस हिस्ट्री की बात करें, जो ये मंदिर है, हालांकि 1990 से पहले की अगर हम बात करें, इस मंदिर को पाकिस्तान के द्वारा मिलिटेंट ट्रूप को जलाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बीएसएफ को डिप्लॉय किया सुरक्षा के लिए। इसके साथ साथ इस पूरी हिस्ट्री को जानने के लिए हम यहाँ के कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो काफ़ी टाइम से इस मंदिर के हवाले से जानते हैं, यहाँ वो आते भी हैं। हालांकि दोनों कम्युनिटी की हम बात करें, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें या हिंदू कम्युनिटी की बात करें, जो कम्प्लीट डिटेल हमें बताएंगे कि मंदिर जो है जहाँ पे लॉर्ड राम आते थे और क्या कुछ एक्टिविटी यहाँ होती थी। हालांकि मेरे वीडियो आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अभी भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है जय राम के भी यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं। अलग अलग जगहों पे हमने कुछ कुंड, यहाँ पे 7 कुंड जो हैं वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पर भी इस तरह की राइटिंग्स में लिखा हुआ है। काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल मंदिर ये नॉर्थ कश्मीर का है। भगवान राम का ये वो यहाँ पे अपने वनवास के दौर में आए हैं और राम को सुना है कि क्या मान्यता भी है कि उन्होंने वहाँ पे हवन रचाया राम कुंड सीता कुंड में, और उन्हीं के आने के बाद भी वहाँ पे वो मंदिर भी बना हुआ है। कितने कुंड हैं? अगर हम कोसल टैंक की बात करें वो उनका बताइए, क्या कुछ इम्पोर्टेंस है उन कुंड? उसमें 7 कुंड हैं मंदिर, उसमें पानी भी होता है। वो राम कुंड, सीता कुंड, भरत कुंड, शत्रुघ्न कुंड, ये 5-6 नामों से, हनुमान कुंड, ये 7 नामों से जाने जाते हैं। और एक कुंड की इतनी मान्यता ये है कि वहाँ पे सीता माता खुद ही नहाने का या अपने उनका क्या करना होता था उनका वहाँ पे होता था, और वहाँ पे लोग भी जाते थे। अब 90 के बाद अब बहुत कम जाना है, नहीं तो वहाँ पे हवन भी होता था। ये आषाढ़ मास में हवन भी होता था, लोग जाते थे। बारामूला से ही नहीं, सारे ज़िले के लोग भी वहाँ पे आते थे और हवन में शमूलियत करते थे। अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, अभी कितना क्या इंपॉर्टेंस है जहां अयोध्या का हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन जो होने जा रहा है? भगवान राम ने को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा बनाई है। अपने माता पिता ने जो उन्होंने उनको हुक्म किया, वो हुक्म की मान्यता की। उसके बाद उसने जाने के वक्त अपने छोटे भाई को राजपाट त्याग दिया, इसलिए ये इसकी मान्यता है। इसीलिए तो इस वक्त जो वहाँ पे मंदिर बन रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि वहाँ पे ये 500 साल के बाद मंदिर बनाया जा रहा है। जहां अयोध्या का हिस्टोरिकल सेलिब्रेशन होने जा रहा है, वही अगर कश्मीर घाटी के मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जो बारामूला में स्थापित यहाँ पे शिल्पोत्री मंदिर है या उसके साथ और भी राम टेम्पल कहीं कश्मीर घाटी में है, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है परवेज सलाम। आप मुझे बताइए, बारामूला की कोसल टैंक की हमें हिस्ट्री बताइए, क्या कुछ रहा है? देखिए रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझसे ये बात पूछी। अगर बारामूला की हिस्ट्री के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप देखेंगे कि बारामूला का असली नाम बारामूला नहीं, विहारमूला रहा है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर मज़हब से से जुड़ा हुआ शख्स यहाँ पे आते थे और इंसानियत की बहबूदी के लिए वो काम करते थे। जहाँ तक आपका सवाल है गोसन टेंग मंदिर का, ये मंदिर है, मेरे फोर फादर जो हैं वो इसके केयर टेकर रहे हैं। मैंने अपने दादाजी के साथ वहाँ पे गया हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम जी को वनवास के लिए भेजा गया
उनके साथ माता सीता भी थी और लक्ष्मण जी भी थे। तो वो यहाँ पे आए हैं गोसन टैंक में, जिसका ये मतलब है, कश्मीरी में हम इसे गोसन टैंक कहते हैं, और अगर उर्दू में मैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ तो इसका माने ये होगा ऋषियों और मुनियों का स्थान, जो कि बहुत एक ऊंचाई पर मौजूद है, वाक़या है। और जैसा सुनने में आया है, तारीखदान से मैं सुन चुका हूँ या अपने फोर फादर्स में सुन चुका हूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे मन को बिल्कुल शांति मिलती है और पूरे बारामूला का नज़ारा होता है। तो खुसूसन मैं यही दुआ करूँगा कि जैसे पहले माहौल था, वहाँ पे बड़े दिन होते थे जिनको हम शीशनेर बड़दोह के नाम से जाने जाते हैं। हमारे ऋषि और मुनि वहाँ पे आया जाया करते थे, बहुत सारे लोग कश्मीरी वहाँ पे अपना रोज़गार चलाया करते थे, लेकिन अफसोस हालात की वजह से वो धीरे धीरे कम होता गया। मेरी नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी तारीख के अवराक को देखें, हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हमें किस बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ाया गया है, उसको ख़त्म करें। और जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स है, उस पर अगर हम चले तो मेरे ख्याल से ये हिंदू मुस्लिम फसाद जो है ये बिल्कुल नहीं रहेगा। हमारा देश जो है ये बिल्कुल पुरअमन रहेगा, शांति से सभी रहेंगे, सभी लोग अपने मजहब की पासदारी करेंगे। विद विजय फिरदौस, रावत महराज, बारामूला, कश्मीर। After Kashmir, let's now take you to Jammu, where my colleague Gursimran travelled to the outskirts of Jammu to meet a special car sevak. Sanjay Kumar happens to be one of the youngest car sevak who participated in the second car seva back in the year 1992. In this report, he basically narrates about how he braved all odds to participate in the car seva and how has the journey been like. Remember, it's been an arduous journey for several car sevaks who've been participating in what many consider a celebration of India's ancient civilization. जी, मुझे ये बताइए 1990 पहली कार सेवा क्या हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास है इस मंदिर का। जब जय श्री राम जी, जब 1990 में कार सेवा का काम शुरू हुआ तो हर जिले में, हर गांव में एक संदेश गया कि चलो वहाँ राम जी का कार्य के लिए चलना है। तो जब यहाँ से गए, देश दुनिया से हर जगह से लोग गए, तो हमारे महाराज जी उस टाइम अपनी जोश और जवानी में थे। ये भी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ से गए, इनके साथ में 2 शिष्य गए। जब दोनों शिष्य वहाँ गए तो जब ये लेट पहुँचे तो बताते कि वहाँ हमको रोक दिया गया। तो कुछ ऐसे थे जो तैराक थे कि उन्होंने सरजू जी में रस्सा बांधा और सरजू रस्से के सहारे रातों रात अंदर गए। बहुत से कार सेवक है जो रातों रात रस्से के बल से अंदर गए। कुछ कार सेवक ऐसे हुए कि नहीं पकड़ पाए और सरजू में भी बह गए, वो वहीं अपना शरीर को उन्होंने निछावर कर दिया। जब ये सुबह पहुँचे तो वहाँ एकदम बस एक ही नारा लगा के चलो जय श्री राम, और बाबरी ढांचा को गिराना है। और काफ़ी नेता थे, बड़े जोशीले भाषण दे रहे थे। जब ये बताते हैं कि गुरुजी और शिष्य दोनों वहाँ आगे बढ़े तो मुलायम सिंह की सरकार थी, उसने आदेश दे दिया कि कोई भी कार सेवक और मस्जिद के पास, बाबरी मस्जिद के पास नहीं जाने पाए। जब वहाँ कुछ कार सेवक कुठारी, वो बताते कुठारी बंधु तो ऊपर चढ़ गए थे, उनको ऊपर से ही गोली मारी गई थी। इनके जो शिष्य थे, ये गुरुजी पीछे जा रहे थे, शिष्य आगे जा रहे थे। इनको पास ही आया और आर्मी वाला, पहले पुलिस वालों ने रोका कि भाई ये आगे बढ़ने से पीछे हो जाओ, उन्हें गोली मारी जाएगी। लेकिन इनके अंदर एक ऐसा जुनून था कि ये पीछे मुड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बताते हैं, महाराज जी बताते हैं कि एक गोली मारी, एक शिष्य को गोली मारी। उसको जैसे गोली लगी तो उसने उठाया, उसने देखा ये तो शरीर छोड़ चुका। उसने जय श्री राम का नारा लगाया, वो भी आगे बढ़ गया तो उसको भी गोली मारी गई। उसको गोली मारी तो उसने आवाज़ लगाई, महाराज जी मुझे तो गोली लग गई है। बोले कोई बात नहीं है, गोली लग गई है तो क्या हो गया है, राम के कार्य में तो जा रहा है, आया इसीलिए था। महाराज जी भी उठे और महाराज जी ने जल्द उन्होंने महाराज जी को भी गोली मारी। तो महाराज जी को गोली मारी, लेकिन इनके पैरों में गोली लगी, ये भी गिर गए। तो उनको उठा करके बताते सरजू में बहा दी। जो भी जितने कार से वो गोली चल रही थी उठा करके सरजू में फेंकते जा रहे थे। महाराज जी को उठा करके जब लाए तो इनको होश आया, तो इनको गाड़ी में रखा और जेल में डाल दिया। जब ये जेल में गए तो कई दिन के बाद निकले। वहाँ से निकले, उन्होंने एक ही प्रण लिया कि मैंने अपने 2 शिष्य यहाँ शहीद, मेरे 2 शिष्य शहीद हुए हैं, मैं राम जी के पास आऊँगा, आस्था वही है, लेकिन जब राम जी मंदिर में स्थापित होंगे तब मैं यहाँ दर्शन करने आऊँगा, नहीं मैं दोबारा आऊँगा नहीं। वहाँ से चरणोपात कर लिए, उन्होंने उठा करके लाए, इनकी पूजा सेवा। शिष्य जो है वो नहीं आए, लेकिन ये चरण पादुका वहाँ से चरण पादुका ले आए, बस चरण पादुका लाए, बोले कि मैं इनकी ही पूजा करूँगा। और जब मंदिर में राम जी विराजमान हो जाएंगे
तब मैं जाकर के राम जी के दर्शन करने जाऊंगा वहाँ। आज भी इस चरण पादुका की पूजा यहाँ पर रोज होती है? बिल्कुल, आज भी इनकी पूजा सेवा होती है सुबह शाम। उनको ही, शहीदों को इनके, आप तो बड़ी खुशी हुई है कि उनके जो सच्ची श्रद्धांजलि मोदी ने ही दी है कि जहां उन्होंने शहादत किया है जिस काम के लिए, आज वो काम पूर्ण होने जा रहा है। 22 तारीख को हमारे राम जी और मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। 33 साल से यहाँ के महाराज जो हैं वो राम मंदिर नहीं गए 33 साल से। हाँ, जब से वो हुआ ना तब के बाद गए नहीं। हमको ही 20-22 साल हुए अयोध्या जाते हैं, हर साल जाते हैं और विवाह पंचमी मनाते हैं। हम महाराज जी को बोलते, लेकिन महाराज जी बोले जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। बाकी कहीं भी चलेंगे, राम हनुमानगढ़ी जाएंगे, दशरथ महल जाएंगे, लेकिन वो जन्मभूमि में वो नहीं जाते हैं। बोले कि मैंने सामने देखा है, मेरे शिष्यों को गोली मारी है। अगर बोले मैं चला जाता मुझे अफसोस नहीं था, लेकिन मेरे सामने मेरे शिष्यों को उन्होंने गोली मारी है और मेरे सामने शहीद हुए और मैंने उनको मुखाग्नि भी नहीं दे पाई, क्योंकि उन्होंने उठा करके सीधा सरजू में फेंक दिया। बड़ा चिल्लाए, लेकिन बोले वहां सुनने वाला कोई। Let's now take you through a special report coming in from Wayanad in Kerala. We tell you the story of Tirunelli temple, and not just that, a painting of Lord Hanuman on a rock. What's this all about? Take a look at this special report filed by my colleague Ashwin. Searching for many days. In fact, finally we have arrived at the bank of Kalindi river, a river which is flowing very close to the famous Tirunelli temple, known to be as the southern Gaya, and lakhs of people offer Pitra Tarpana, which is Pitra Moksham, also is called as oblation to the mains on this very riverside. So it's very important. And while we have been hearing about a particular inscription and the picture of Hanuman, we have finally found it. And this is that not many people know about this particular drawing which is done on this rock. Now, if you look at this particular rock, it definitely looks ancient, because you can see as if there's a lava flow that has come through it. You can see the structure of this rock, and there is certainly very ancient, probably the lava burst that happened before the formation of Deccan Plateau itself could be an indication of this. But what is mesmerizing is this particular drawing which is over here. It shows Hanuman, and next to that you also see in a square a print of footprint, and underneath written a text, and it's written in Kannada, and it's called as Behrucha. Now this Behrucha is in fact a very Vedic word. It, in fact, the Malayalam translation, what we found from one of our expert who has also joined us, he said there is a process of learning a particular way of doing tarpana and many other rituals related to Hinduism. So that particular word, broad definition, is what is called as Tagariyam in Malayalam, and Pagariyam in Malayalam, and the translation of that is Behrucha. So here we see Lord Hanuman on a rock. You can see the entire rock, feet of Sri Rama, and Behrucha, a Vedic word written. It is absolutely mesmerizing. You know, Jan 22nd, Ayodhya Prana Pratishtha is going to take place. And in Wayanad district, we are very close to the borders of Karnataka. The Nagarhole is very close. The Nagarhole Tiger Reserve is so close by. And just on the border, we can see a beautiful, beautiful drawing on the rock. And this certainly feels extremely satisfying to find it. So he is somebody who, Sukumaran is somebody who helped us find this place. After much research, we finally found this place. So you knew about this place before. How sacred is this place? You have told us that many saints have meditated over here. Is it true? Like, can you? It's a very old place, and here we are also doing meditation here. It's very close to forest and nearby Kudirakode temple.
Okay. On this way, Rama and Lavakusha, Sita also May have passed. may be passed here, Okay. passing way, their way. So certainly, look at this beautiful river. I just want our video journalists to pan across and show this river itself is called as Kalindi River. So it is a connection with Lord Sri Krishna. Is it right? Maybe because the name Kalindi on the Krishna Yuga. Okay. That is why we are called Kalindi. Yes, and also Krishna means black. And the river, you saw the river is all blacky shade. Correct. That is why Krishna and So- Kalindi. Beautiful. I cannot express anything more. What we see here is a piece of history probably linked hundreds and thousands of years ago. Somebody has done this and it's all connected. He says there are many sages who have meditated over here. They have found several evidences for that. The Kalindi river is flowing. Sri Rama's holy feet is drawn over here. Hanuman is there. What more can one ask for on ahead of the Prana Pratishtha in Ayodhya, when today we can find such a beautiful finding in Wayanad, which is so far away, and the stories of Ramayana we can definitely now say it has gone far and wide, and these inscriptions will always remain etched in stone, and so does the memory of Rama and Ramayana will remain forever and eternal. Many forest area and through the waters of Kalindi, we have finally found the inscription of in Kannada with the feet of Lord Rama, as well as a drawing of Hanuman next to it. A drawing that is probably very ancient, which has gone hundreds and thousands of years ago. There are many such spots that are yet to be revealed to the world to know the glory of Lord Rama and of that of Ramayana, and this is just one among them. With video journalist Mani S. from Wayanad, Ashwin Nandakumar, Republic TV. Let's now take you through a special story coming in from Karnataka-Kerala border. Ladies and gentlemen, much has been spoken about how our temples have been destroyed. There are living examples of how various shrines across the country have been destroyed, and one such example is from this shrine en route to Tirunelveli temple. Now, right in the middle of the forest is a remaining part which is completely in ruins. It is said that this was destroyed by the army of Tipu Sultan. Take a look at this special report filed by my colleague Ashwin, which gives you a sense of what entailed in the past, and more importantly, how temples have been destroyed by the Mughals in the past. We are at the Kerala-Karnataka border, and this place is en route to Tirunelveli temple. And here, when you go a few meters away from the road towards inside the forest, you can find two shrines. Two of these shrines are similar looking. One of the shrine, which is this one, is facing east, whereas the other shrine, which is adjacent to it, is facing north. Now, these two shrines are that of Lava and Kusha, the two identical twins of Lord Rama and Devi Sita. Now, currently, this shrine comes under a Gowda family, who are based nearby, and the architecture also, if you see, it has got a very distinct Karnataka style architecture as well. Although this temple, the shrine, which is right now in a dismantled position, it has definitely worn out. It is somewhere in the middle of the forest. The shrine continues to thrive over here. Now, this place is called as Kalishwari
temple, and there you can find two identical shrines, and inside we can find two installations which are very identical. And also what is important to note is that this place, ancient name was called as Kudira Kod. Kudira Kod, Kudira means horse. So the legend says that when the Ashwamedha Yaga happened, Lava and Kusha has actually stopped the horse at a location, and the people over here believe that this is a location where the horse was taken in control by Rama's two sons. And later what followed was how Lakshmana, how all the others came in, and then the story of Ramayana follows. So a very interesting place, a temple managed by a Gowda family in Kerala border is something that is fascinating, and that of Lava and Kusha, yet another shrine in the middle of the jungle. There are people who said that elephants roam around in this area, and it is very frequent visitors in these shrines. As you can clearly see, there's nothing much remaining. There is not a structure, proper structure. However, this temple, the shrine has survived the time, I must say. We are also being told that during the time of Tipu Sultan, there was an attack in this temple, and most of this temple's property and resources were also destroyed. However, standing tall is still the remnants of the grand glory of Rama and Ramayana. Right now we are at Kalishwari temple, which is deep inside the forest at near Tirunelli in Wayanad district. Now this place is very close to the Karnataka border of Nagarhole as well. Now, if you see the architecture of this place, it has a distinct Karnataka flavor to it. And there are two shrines, identical shrines. One is facing north and the other is facing east. The ancient name of this place is called as Kudira Kod, which Kudira means horse. So it is believed that Lava and Kusha, whose shrines are what you're seeing right now, had tamed the Ashwamedha horse in this very spot. Today this temple is managed by a Gowda family who lives in Kerala side. So it's a distinct Karnataka style architecture which is there. But this temple certainly seems to have been attacked. There are information that it was also attacked by the Tipu Sultan's invading army as well. But the important part is the legend of Ramayana still lives on so many kilometers away from Ayodhya, and the legend that Lava and Kusha lived in the forests of Wayanad still remains, because these are some of the grand icons that reminds of the history of the place. Long years back, Rama held a Ashwamedha Yagam, and the Ashwam comes here and caught the Ashwam from by Lava and Kusha. That is the importance of Kudira Kod, which the name called as Kudira Kod, horse place, horse held place. That is why we are calling Kudira Kod. Now the time the temple is not working as a temple. There is no chance to renovate because the forest department strictly denies the area. So and also there is not a huge population. There is no humans there, or colony, or otherwise, other thing. Only once in a year they are held a puja for Kali Ishwari. That is the Gowda team. They were calling only the Kali Ishwari. We hope you enjoyed watching these reports coming in from different parts of the country. We promise to get you more such reports in the coming few days. That's all that we could pack in this edition of This Is Exclusive. On the other side, news and updates continue.